Hi students, today we have taken chapter coordinate geometry and we will be solving 10 questions, basically PYQs जो previous year में आ चुके हैं questions. तो देखते हैं पहला question क्या है. If a minus 6 7 and b minus 1 by minus 5 coordinates of a and b are given and then the asking that 2ab, what is the 2ab? Okay. सो डिस्टेंस ए बी अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके ए के अगर कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है दैट इज -6 और 7. x1 आपका -6 है एंड y1 इज योर 7. सेम b इफ इट इज x2 एंड y2 इज गिवन -1 -5. तो x2 इज योर -1 एंड y2 इज योर -5. करेक्ट. Now you have to find the AB first. AB का क्या फॉर्मूला है? This is x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. करेक्ट. Then put it here. x2 is your -1. Then -6. So this will be +6 square. y2 is your -5 and -7. Okay. So ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर एंड दिस विल बी योर -12 स्क्वायर. दैट इज 25 प्लस 144 एंड दैट इज 169 एंड 169 इज अ स्क्वायर ऑफ 13. सो यू कैन राइट 13 स्क्वायर. इट विल बी कैंसल आउट. सो ए बी इज योर 13. सो इफ ए बी इज 13 देन ट्वाइस ऑफ ए बी इज 2 into 13. That is 26. So the answer is 2AB is 26. Okay, it was easy. Let's move to the next question. Now the second question is asking that midpoint of the segment AB is given if the coordinates of B are -2 and 3, then the coordinates of A. So अगर आप considering कि आपके पास एक straight line है that is A and B and the center point is P is given 0 and 4. Coordinates of B is also given -2 and 3. You have to find out the coordinates of A. So your formula is for, let consider कि अगर हम लोग फॉर्मूले से जाए, अगर ये x y है और B के कोऑर्डिनेट्स x1 y x2 y2 है और A के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 है. ठीक है. तो आपका जो x होता है दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 by 2 and y is your y1 प्लस y2 by 2. ओके. जब x p अगर मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू दी गई है 0. ओके. x1 यू हैव टू फाइंड आउट. x2 इज ऑल्सो नोन दैट इज -2. ओके एंड डिवाइड बाय 2. सो दिस विल गो हियर 2 into 0 2. तो 0 इक्वल्स टू x1 -2. तो वो वहाँ पे चला जाएगा तो x1 विल बी 2. करेक्ट. सेम फॉर y इज गिवन 4. y1 आपको निकालना है, y2 आपको दिया गया है दैट इज 3 डिवाइड बाय 2. यहाँ पे चला जाएगा तो दिस विल बी 8 इक्वल्स टू y1 प्लस 3. y1 हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 दैट इज 5. सो आपके जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 इज 2 एंड y इज 5. ओके. ठीक है. चलिए, दैट वाज अ इजी क्वेश्चन. Now moving to the next question. Now coming to this question, if the coordinates of one end of a diameter of a circle is given 2 3 and the coordinate of its center is also given, then the coordinates of the other end of the diameter. Let's understand कि आपका एक सर्कल है. ठीक है. उसका एक सेंटर पॉइंट है और ये डायमीटर. उसमें डायमीटर का एक एंड का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है 2 3 दैट इज A. ठीक है. एंड ऑल्सो द सेंटर इज ऑल्सो गिवन दैट इज -2 and 5. That is the other end of the diameter you have to find out. We don't know. So same, if the coordinates of this xy and this is x1 y1 and this is x2 y2. ठीक है. अब आपका अगर ये सेंटर पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू
x1 plus x2 by 2. X is given -2, x1 is also given, you have to find x2, correct? This will go here, -4 equals to 2 plus x2, correct? So x2 will be -4 -2, that is -6. Okay, now come here, y is what? y1 plus y2 divided by 2. Y is given 5, y1 is also given 3, plus y2 we have to find it out, 2. This will go here. So 10 is equal to 3 plus y2. y2 is equal to 10 minus 3, that is 7. So the coordinates of x2 is -6 and 7. This would be your answer, correct? This one was also easy. Now next, move to the next question. Now coming to our fourth question, the question is asking that in the given figure, P is given, P and Q are the points of the trisection of the line segment. Trisection मतलब जो तीन पार्ट होंगे AP, PQ and QB, इन तीनों के लेंथ बराबर होंगे, ठीक है, करेक्ट? इन तीनों के लेंथ जो होगा वो बराबर होगा. देन आपको P और Q का भी पॉइंट दिया है, तो लेट्स राइट इट डाउन. 5 - 3 एंड Q इज गिवन 3y, करेक्ट? नाउ अगर ये इक्वल है तो P विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ AQ एंड Q विल बी द सेंटर ऑफ PB, करेक्ट? देन y इक्वल्स टू, आपको y निकालना है. देखिए, अगर P इज द सेंटर पॉइंट ऑफ AQ, करेक्ट, एंड वी कंसिडर इट एज x1, y1, this is x and y, and this is as x2 and y2, ठीक है? तो अगर आपका x सेंटर पॉइंट है तो x विल बी x1 प्लस x2 by 2, करेक्ट? तो x क्या होगा? x तो दिया हुआ है, सो नो नीड टू फाइंड आउट, हम लोग वैसे भी क्रॉस चेक कर लेंगे. 7 + 3 by 2, दैट इज कम्स अराउंड 5. ओके, तो x is 5 इज ओके विथ अस, नो इश्यू. देन वी हैव टू फाइंड कि हमारा जो y2 है वो क्या आएगा, ठीक है? तो यह y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. y इज वॉट? -3. y1 इज वॉट? -2 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू -2 प्लस y2, करेक्ट? तो y2 विल बी -6 plus 2, that is -4. So this value is 3 minus 4. So y is your -4. Okay, done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Now coming to our fifth question, the question is asking that ABCD is a rectangle whose 3 vertices are given to you, and then the length of one diagonal you have to find out. Then first let's draw a rectangle, correct? This is a rectangle. You should know the properties of a rectangle. Rectangle is a structure whose parallel sides are equal, correct? Opposite AB and DC are equal, whereas AD and BC is also equal, and they are parallel to each other. Their diagonal is also equal, okay, and bisect each other. The properties will be AB equals to CD, AD equals to BC, and AC equals to BD, okay, correct? Now write down the diagonal also, the coordinates also. Here 4 0, C is 4 3, and D is 0 3, and A we don't know, let X and Y. The length of one of its diagonal, okay, then it's okay. If it is asking only one diagonal, we can say DB also, DB, and DB का अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे तो लेट इट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके x2 y2 है. तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट? देन x2 इज योर 4, x1 इज 0 प्लस इसका स्क्वायर, y2 है आपका 0
ये -3 स्क्वायर, करेक्ट। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, दैट इज √25। तो आपका dB आ रहा है √25 एंड वी नो 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट जाएंगे, दिस इज 5। द लेंथ ऑफ dB इज 5, then length of AC is also 5. Okay, no need to find it out. If the question is asking what is the coordinates of A, then you need to find DC equals to DA, correct? Then from that you can find the coordinates of A also, correct? But it's not asking, so let's not solve for it. The length of one of its diagonal is 5 units. Now coming to the sixth question, it's a midpoint question where the midpoint is given, P is your midpoint and they're having coordinates A by 2 and 4, and it's joining the 2 points, that is A and B. Then you the question is asking, then what would be the value of A? Okay, so first draw it like A and B. Coordinates of A is -6 and 5 and B is -2 and 3, where coordinates of P is given by A by 2 and 4, correct? If you know that, you can say it is X and Y. This is X1, Y1 and this is X2, Y2, okay? Then you have to find the value of A by 2. Let X क्या होगा आपका, अगर मिड पॉइंट है तो X1 plus X2 divided by 2. Here X is A by 2. X1 is given -6 and X2 is given -2 divided by 2, correct? You can cancel it out. A is your -8, ठीक? The value of A is -8, correct? Okay, now move to the next question. Now comes to the question 7th. The question 7th is about the collinearity, whether the points are collinear or not, correct? So the coordinates of ABC are given and asked that is whether they are collinear or not. So first you have to understand कि collinear मतलब होता क्या है कि they have to be in the straight line, like A, B and C. They has to be in straight line. X2, B is your -3 or -4 and this is 7, 5, -4, okay? So one is that you find the distance, because if they are collinear, they should follow that AC, distance of AC equals to AB plus BC. But solving this requires a lot of mathematics, so better to go for slope. If they are collinear, they will have same slope, and slope, you are aware, if you want to find the slope that is given, like slope is, the formula of slope is 2 coordinates is given, and this is y2 minus y1 and x2 minus x1. If you want to find the slope of AB, correct? AB है आपके पास, so AB में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि आपके जो A के कोऑर्डिनेट्स है, that is x1, y1 and that are x और 2, correct? और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, that is -3, -4. तो अगर हम लोग इसको स्लोप निकालने जाएंगे तो वो क्या होगा, y2 minus y1, that means -4 -2 and x2 minus x1, that is -3 x, ठीक है? That is -6 by -3 x, or if you take, or let it be like this only. Now again, if you want to find the slope of BC, तो let अभी फिर से कंसिडर कर लेते हैं कि B x1 y1 है और उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -3 -4, और C के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है? जस्ट टू पुट इन द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला. तो इसका स्लोप क्या होगा, सेम y2 minus y1 -5 -4 and x2 minus x1, that is 7 minus -3. So this is -5 plus 4
एंड 7 प्लस 3, तो ये आ गया आपका -1/10. ओके, सो इफ दे आर कोलिनियर देन द बोथ द स्लोप विल बी इक्वल. दिस स्लोप and this slope will be equal. So equating both slope, -6 -3 -x equals to -1/10. ठीक, ये हो गया -60, ये हो गया -3 -x, तो -60 equals to 3 plus 3 plus x. X would be -60 -3, so it is coming around -63. Correct? The value of x is -63. If this coordinates -63/2 है तो A, B, C are collinear रहेंगे. Okay? Let's move to the next question. Now coming to our 8th question, it is asking about the parallelogram ABCD and vertices उसको दे दिए. तो first let's draw a parallelogram. And parallelogram की आपको properties पता होनी चाहिए. Parallelogram में क्या होता है कि two parallel sides are, a pair of parallel sides are equal, like ABCD. तो आपका AB is equals to CD and AD is equals to BC. Okay, the coordinates is given. ओके, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. ठीक है, ए बी का क्या डिस्टेंस होगा, x2 माइनस x1, तो माइनस यहाँ से ले लेते हैं, x1 माइनस x2, तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर. ओके, इक्वल्स टू सी डी का डिस्टेंस. सी डी का डिस्टेंस हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर. करेक्ट? सो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस इज होल इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर. ओके, सो दिस इज 4 + 1 एंड दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1. Squaring both side, okay, this will get cancel. तो अभी जो हो जाएगा 5, 4 + 1 5, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो 5 equals to x² - 4x प्लस 4 प्लस 1, तो 5 equals to x² - 4x plus 5, 5 5 cancel, x² - 4x equals to 0. That means x - 4 equals to 0. X equals to 0 or x - 4 equals to 0 or x equals to 4. Correct? Now you have to choose between these two values. x 0 होना चाहिए, x 4 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे है correct, you have to d was x4 and y4, so you can choose the value of 4. Okay, the answer will be x equals to 4. Okay, so the x की दोनों वैल्यू हो सकती है 4 और 4 और it can be 0 4. The answer will remain the same. So the answer of x will be the 2. So it depends upon the option that is given to you. You have to select either 0 or 4, or maybe अगर दोनों ही दिया होगा तो दोनों is the correct answer. Now coming to our ninth question. Here the question is asking that the perimeter of a triangle you have to find it out and vertices are given. So let's draw a triangle whose vertices are given. Now for a parameter, you have to, parameter is sum of all sides, correct?
So parameter of this triangle will be sum of AB plus BC plus AC. Okay, so let's first find out AB. AB का क्या distance होगा? Okay, तो AB same x2 minus x1. Okay, so this minus this, 0 minus 0 का square plus 0 minus 4 का square. Okay, so this is coming around minus 4 का square root cancel, 4 4s are 16. Okay, and this is 4 का square. AB is your 4. Okay, now you have to find out BC. So BC will be 0 minus 3 square plus 0 minus 0 का whole square. Okay, so this is coming around minus 3 square, that is 9, that is 3 square 3. Okay, then similarly you have to find AC. AC is 3 minus 0 का square plus 0 minus 4 का square. This comes around 9 plus 16, that is 25, that is 5 का whole square, cancel 5. Okay, now you have to find the distance parameter. Parameter is AB plus BC plus AC. Okay, so AB is your 4, BC is 3, and AC is 5. So this is 12. So parameter is 12. Okay, done. Then let's move to the next question. Now coming to our last question, if R is 5 and 6 is the midpoint of a line segment AB, joining the points A and B points are given. So let's draw it, A and B. Okay, and the midpoint is R. R is given 5 6 and A is given 6 5 and 4 and 5. You have to find the value of Y. So you know, let's consider it as xy. This is x1 y1, this is x2 y2. If it is a center point, midpoint, then we have to find this y, that means y2. So y equals to y1 plus y2 divided by 2. So y is your 6, y1 is your 5 plus y2 is your y by 2. Okay, so there go 12 equals to 5 plus y. So y is equals to 12 minus 5, that is comes around 7. Take it. So the coordinates are, the actual coordinates are 4 and 7. Okay, so now we have completed the question, 10 questions of coordinate geometry, and in a series of this we will be daily taking 10 questions that are PYQs जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, तो इसको आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.